नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जो आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस होस्ट पूजा चंद के साथ। आप सभी के फीडबैक और फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीजी में कोविड की सिचुएशन अभी बहुत गंभीर है। इस मुश्किल समय में आप अपनी परिवार की, रिश्तेदारों की और कम्युनिटी की सहायता कीजिए। आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप हमेशा हमें कॉल करते हैं। स्कूल्स का सीज़न अब शुरू हो गया है एंड विद द कोविड restrictions all the childrens are required to wear masks in school. पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को ये ज़रूर याद दिलाना कि अपनी मास्क और बच्चों के साथ एक्सचेंज ना करें। बच्चे हैं, भूल जाते हैं। सितंबर 13 से अगर कहीं आपको किसी सर्विसेज, बिजनेसेस या कोई सोशल इवेंट्स में जाना हो तो ये रिमाइंडर आपको खुद को देना होगा कि क्या हमारे पास हमारी वैक्सीनेशन कार्ड है या उसकी कोई कॉपी है। Most of the sports events, outdoor events, bars, restaurants, pool and many more places अब require करेंगे कि आप अपना proof of vaccination provide करें। आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन या आप अपने फ़ोन में एक डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन ऐप अवेलेबल फॉर यू ऑन योर फ़ोन। अब मिलते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ। Buying or selling a house is a difficult process. Get Brent Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion. Brent Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर का न्यूज़ लेकर आ रहे हैं विक प्रसाद जी। आइए सुनते हैं। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। एक 50 वर्षीय एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जो मलोलो नांदी का रहने वाला है, उसे 23 काउंट्स ऑफ फोर्जरी के लिए चार्ज किया गया है और नांदी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उसे रिमांड पर रखा गया है। रोहित प्रसाद त्रिवेदी को पोजीशन ऑफ इलीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए चार्ज किया गया है। त्रिवेदी पर ये आरोप है कि उसे फोर्ज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कंसाइनमेंट रिसीव किया था। उसको पुलिस पिछले सप्ताह एक जॉइंट ऑपरेशन जो पुलिस, फिजी रेवेन्यू कस्टम्स और फिजी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था, उसके अंतर्गत उसे अरेस्ट किया गया। इस केस की सुनवाई सितंबर 27 को होगा। सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी मेंबर लिको नवाईकुला ने सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम के खिलाफ सिविल क्लेम किया है। नवाईकुला का कहना है कि नवाईकुला के नाम को इलेक्ट्रल नेशनल रजिस्टर ऑफ वोटर्स से हटा देना चाहिए था, ये सही नहीं है। उनका कहना है कि सनीम के इस कदम के कारण संसद में उसके सीट को खाली घोषित कर दिया गया था। सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उनका ये कहना है कि पब्लिक ऑफिसर होने के नाते पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए स्टेट प्रोसीडिंग्स एक्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल भी एक पार्टी होंगे। ये प्रोसीडिंग पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ काम में लाई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 347,679 लोगों को या 58.2% पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है। ये 60% से 1.8% कम है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे मैनिमारामा ने इससे पहले कहा था कि फिजी में 60% पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट होने पर कर्फ्यू
आवाज रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे समाप्त होगी तथा वितिलेवु में कंटेनमेंट बॉर्डर्स को भी हटा दिया जाएगा। देश के 569,931 एडल्ट्स को वैक्सीन का एक डोज दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि 97.1% पॉपुलेशन अब एक डोज ले चुके हैं। किंग्स और क्वींस रोड हाईवे के निकट रहने वाले गांव में 15,866 लोग वैक्सीनेट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगबाई मारामा ने कहा है कि सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है, जबकि बॉर्डर शायद आने वाले दिनों में हटा दिए जाएंगे। आयतो की अफेयर्स मिनिस्ट्री ने विलेजेस का दौरा करने के बाद में इस आंकड़े को इकट्ठा किया है। बानीमरामा का कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री अन्य सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर वैक्सीन लेने पर जागरूकता ला रही है। उनका कहना है कि वैक्सीन फिजियंस को वायरस से सुरक्षित रखेगा। पिछले 24 आवर्स में कोविड-19 के 128 केसेस सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 90 केसेस वेस्टर्न डिवीजन के हैं, जबकि 38 केसेस सेंट्रल डिवीजन में दर्ज हुए हैं। कोविड-19 से किसी और की मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि 2 लोग जो कोविड से संक्रमित थे उनकी मौत अन्य कई बीमारियों से हुआ है। देश में कोविड-19 से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि अभी तक फिजी में 12,814 एक्टिव केसेस है। कई सौ फिजियंस कोविड के सेफ प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें रोज पब्लिक हेल्थ इन्फ्रिंजमेंट नोटिस दिए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ब्रिगेडियर सितिवेनिंग गिलियो का कहना है कि ये एक चिंता का विषय है, जबकि ऐसे बर्ताव करने के कारण रिकवरी एफर्ट पर असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में जबकि वितिलेवु में कंटेनमेंट बॉर्डर्स हटाए जाएंगे, तब ऐसे में गिलियो फिजियन से याद दिला रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ रेस्ट्रिक्शंस बनी रहेगी। हाल ही में लोगों को 171 इन्फ्रिंजमेंट नोटिस दिए गए थे, जबकि मास्क न पहनना लिस्ट पर सबसे टॉप पर था। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगबाई मारामा का कहना है कि स्थिति के कुछ हद तक सामान्य होने के बावजूद जिम्मेदार रहना चाहिए। तावा और बा के 15 अनलाइसेंस मछुआरों के खिलाफ छानबीन की जा रही है, जबकि ऐसा आरोप है कि वो गैर कानूनी रूप से बीच डीमर हार्वेस्ट कर रहे थे। फिशरीज मिनिस्टर सेमी कोरई वसाउ का कहना है या उन्होंने पुष्टि की है कि ये ग्रुप ताइलेवु वाटर्स में गैर कानूनी ढंग से ऑपरेशन कर रहे थे। वेराता के विलेजेस ने बुधवार को बीच डीमर्स जब्त किए हैं। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के साथ। अब स्थानीय समाचार। बीसी में डॉक्टर्स सभी लोगों से वैक्सीन लेने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं होना चाहिए। वैक्सीन प्रूफ के होने का कारण अब अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, पर उसके बावजूद काफ़ी लोग वैक्सीन के बिना भी कम्युनिटी में घूम रहे हैं। पिछले शुक्रवार तक बीसी में लगभग 7.6 मिलियन डोजेस एलिजिबल लोगों को दी जा चुकी है और 78% एलिजिबल लोग पूरी तरह इम्यूनाइज्ड है। इस सितंबर 13 से कम वैक्सीन के एक डोज रिक्वायर्ड है, वरना बहुत सारे बिजनेसेस और वर्क सेटिंग्स में एंट्री नहीं मिलेगी। और अक्टूबर 24 से मूवीज़, रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए फुली वैक्सीनेट होना अनिवार्य है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। सैनिक और विक्टोरिया पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु एक पुलिस ऑफिसर के गोली से हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस शूटिंग की छानबीन कर रहे हैं। सैनिक पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति वेपन के साथ थ्रेट था और विक्टोरिया पुलिस ने नेगोशिएट किया, लेकिन 1 घंटा के बाद भी जब थ्रेट लेवल कम नहीं हुआ तो उसे शूट करना पड़ा। 2021 कैनेडियन फेडरल इलेक्शन सितंबर 20 को होने जा रहा है। आपके वोट्स डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी की जीत होगी। 338 सीट में से मेजॉरिटी पाने के लिए 178 सीट्स एक पार्टी को जीतना होगा। लिबरल पार्टी की ओर से जस्टिन ट्रूडो, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से एरिन ओटूल लीड कर रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जगमीत सिंह लीड कर रहे हैं। सितंबर 20 को इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद के जगत से कुछ जानकारी। आने वाले सप्ताहांत सितंबर 18 से सितंबर 19 तक वैंकूवर में वैंकूवर सेवन्स बीसी प्लेस पर खेला जाएगा।
खेत की बात है कि फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। जर्मनी, चिले और हांगकांग, मेक्सिको जैसे टीम इस खेल में भाग लेंगे। पूल्स कुछ इस प्रकार है। पूल ए में कीनिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्पेन को रखा गया है। पूल बी में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड और जमैका को रखा गया है। पूल सी में कनाडा के साथ में है चिले, जर्मनी और यूएसए को रखा गया है। पूल प्ले शनिवार को होगा। क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स रविवार को होंगे। एडमिंटन सेवंस कॉमनवेल्थ स्टेडियम पर सितंबर 25 से सितंबर 26 तक खेला जाएगा। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडियो में, या आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपका बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647. A very happy first birthday to Myra Raj. Myra is the daughter of Shelvin and Pritika Raj of Surrey, BC. Myra is turning 1 on September 17th. Lots of love, hugs और प्यार मिला है उसके नाना और नानी मिस्टर एंड मिसेस भान प्रताप और आजा एंड आजी मिस्टर एंड मिसेस रेमन राज ऑफ किटमेट, BC. और बहुत सारा प्यार from the rest of the family in Canada and abroad. On behalf of our Fiji in Focus team, we would like to wish Myra a very happy first birthday and wishing her a long and healthy life. Happy birthday, Myra. Fiji Disaster Relief Society, along with Fiji in Focus, will be organizing Fiji's 51st Independence Day on October 9th. This event will be held at Kanna Banquet Hall at 6:30 p.m. Tickets are only $30 per person, and all proceeds from this function will go to Pix Diversity Village. For tickets, please call the following: Kaving Chand at 604-562-4569, Kamilla Singh at 604-537-5123, or Andy Chand at 604-825-8261. Canadian Federation of Fiji Organizations is having the 2021 Community Awards Gala on Sunday, October 24th at Kanna Banquet Hall in Surrey, BC. Tickets are only $30 for this event. For more information, you may contact Shannon Parmel, 778-709-2853, or Vidya Sharma, 604-941-6427. अब आप देखेंगे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू शैनन पार्मल के साथ। Hello and welcome back to Fiji in Focus. मैं आपका host Shannon Parmal. Today, हमारे स्टूडियो में एक special सी guest आई है and her name is Pooja Chand. So hello Pooja. Hello. How are you doing today? Very good, thank you. Thank you for joining me. Absolutely. Yeah, I'm doing great. I'm excited you're here. You're actually a new host for Fiji in Focus as well. So today's your first day here with us, right? Yes, absolutely. It's very exciting actually. Yeah, I'm very excited to get to talk to you. I just got to briefly hear about who you are, and now I want to ask a couple more questions about this. Absolutely. But first and foremost, I want to ask you about who you are and where you from, actually. Yeah, so regular Surrey girl, but actually a Fijian girl, I would say. Born and raised in Fiji. Been here for past 11 years in Canada, and actually I feel like I've been known now by a Smiling Queen. A lot of people call me that because that's my username mostly, and then I call myself Smiling Queen. I'm known mostly for lip singing on TikTok and kind of posting videos about positivity. So I'm well known in their criteria. However, I'm very glad to be noticed and kind of being given a chance at a Fiji in Focus show to be a part of the family. I feel that a lot of things that I have put out there on my TikTok platform have been an inspiration to a lot of people, so they're just enforcing me to come on a platform where it suits me, my voice can be out there. So I'm excited. That's wonderful. We're absolutely excited to have you a part of the team. Thank you. And I can't wait to see where you go from here. But you said you're from Fiji, actually born and raised. So what part of Fiji were you from? And tell us a little bit more about your childhood. Yeah, absolutely. So my dad
was a police officer in Fiji, and we have been living in Fiji for all these while, and we have moved a lot of places because of his occupation. So as a police officer, he was transferred after a couple of years. So I was born in Navua, and as I was a baby, we just decided to move from there, I guess. And after that, we moved into Singatoka, where I had grew up for the 10 years that I was there. And then from Singatoka, I moved to Nandi, and lived in Nandi for about 5 to 6 years, and then we migrated to Canada. My sister was here, so we were all here as family, but in Fiji it was just me, mom and dad living together, and in the police barrack in Nandi, and I went to school in Nandi. Most of my childhood basically was in Singatoka for 10 years. I went to Singatoka Methodist College, school there, and then I was very very Western girl, like from all the West Side, did everything in the West Side. Didn't even go mostly to Suva, like to live or anything like that. So very Western girl. And when I came to Canada, it was a little bit different environment for me because, of course, friends and languages and people, like everything is different when you migrate from one place to the other. So that was a little bit of a challenge for the first few years, but hey, still Fijian at heart. Yeah, no, absolutely. I know our roots are definitely a big thing. You're actually born there. I'm born here. All right, yeah. So, okay. but nonetheless, I still feel very connected every time I go back to Fiji to visit. So about what age did you actually end up migrating to Canada then? Yes, so I was 18 and I turned 19 here. So the legal age, I turned 19 here. And when we were living in Fiji, I really think the main difference from back then to what I experienced here in my own life, I feel like the culture, it's a lot different back there. Like we practice it a lot. We're a lot in our zone there because of the community, because of everything around us. Everything is just different. But when we migrated there, I miss the culture that we had back there, how we spent Diwalis, how we had, patakas and everything, how we could do all those things. Yeah. I miss rangolis and everything. You can still do rangolis here, but it's like not that same feeling. It just feels different being back home, Absolutely. So a little bit things that are missing part of life when we look at back Fiji and how it is and here how it is, because it's way different. But I think living there was one of the most beautiful things I've ever experienced in Fiji back home. You realize that only once you're done, once you're migrated from your homeland. So that's what I kind of miss a lot. But apart from that, I think I would love to go back and live in Fiji if I had a chance to. Oh, nice. Yeah, it's just the growth, I would say, the one thing that I'm kind of concerned about, but that's always can be settled. You can be anything, anywhere you want to be, but I would love to go back and, just settle again. Depends on my husband. That's nice to hear. Yeah. So speaking of culture, actually, so you are a host for Fiji in Focus, meaning that you're very, well-spoken in Hindi, actually. I got to see this in action firsthand. And so I want to ask, where'd you learn your Hindi that well? Right. Well, growing up in Fiji has one biggest beneficial points would be that जब हम Fiji में school जाते हैं तो हमारे Fiji में in schools they always offer you Hindi classes. It's mandatory to take Hindi classes in some schools. Yeah. So growing up, I got a chance to learn Hindi in school, and I studied that up till I was in, I would say, Form 3. I think that would be I'm not sure. I think that's grade 10. Yeah, here. Yeah, it's really hard to compare. Yeah. So up till then, I did Hindi, and from there, then when I went to high school, I started. I dropped out on Hindi, but then I still had the urge to learn because my dad used to make us read all the Ramayana at home and Sanskrit Hindi. So he made it when we had Ramayans at home, when we had Pooja at home, we had to read it. So my dad made us do that. So it was a lot of, my mom and dad had a lot of cultural education going on all the time in home. They would talk to me in Hindi, we would speak in Hindi. I took classes in Hindi as well in school. So mostly from my own family, I would say I've learned a lot of, language in our own Hindi language. Like हमारे mother tongue, हमारे Fiji mother tongue. But when it comes to Shuddh Hindi, हम जब ऐसे बात कर रहे हैं, this one I've learned mostly from movies. We see a lot of Hindi movies back home. Indian dramas too. Yeah, so what mom used to do, she used to just put me in front of the camera when I was a kid and be like, बैठना आया, हम नहाए खाता है, कहीं जाना नहीं. So don't go anywhere, sit right here in front of the camera, I'll be right back. So when she would do her chores and go shower, I would not move because I would be in front of the
TV, and that would be a Hindi movie or a Hindi song playing, and I would just sit and watch. And I got to kind of learn from, as a kid. So it was very helpful to me because I started speaking like that at home too. And when I was looking at movies, I would just, mimic someone or kind of just try to talk like that. But I think that kind of just inbuilds from your own culture, from your own home. Like there's more people speaking in Hindi, तो वहाँ से आप सीखते हैं. That's where I had it from. I still speak like that with my husband at home. He doesn't understand much Hindi, but I still speak in Hindi. I try to make him understand as much as I can, but that's how I do practice. I think it takes you a long way. That's great. Yeah, you definitely have like such an extensive educational background too, which I know that I lack. Yeah. Here, I just talk to my nani nana and like that's about it, right? Just and family. That's perfect though. Nani nanas also like they teach you so much Hindi. It's so nice to learn from them because they are actually they were there with the times. Whole Hindi was there. The culture was all Indian and Shuddh Hindi. So it's nice to learn all that. Yeah. So we're just about to wrap up actually, but I want to quickly just ask you about your TikTok. Because I know you have been blowing up in popularity on that. So tell the viewers just a little bit about that briefly. Yeah, so TikTok. I've been on TikTok since 2018, and right now I have a following of 459,000 people, which is so lovely to have, and I have 3.2 million likes. So basically, it's very touching and very heartwarming. People are liking, my work, and basically, I just started TikTok just like that because I just love entertainment, and I love lip syncing, and I love entertaining other people, and I feel like I have a bit of sense of humor, so I kind of blend in that with too. It's just kind of a way. I'm a people person, and I feel like it really matches that platform with the way I am. And the amount of response I've gotten back very positively really makes my heart melt. And so I'm well known as Smiling Queen of TikTok, Pooja from TikTok. And a lot of people are supportive through that. Mostly people are supportive when I go and kind of talk about positivity, and I educate them things about how life is here in Canada compared to how life is back home. And what to know, what not to know when you migrate from your back home to overseas. So I do a little bit of everything, so it kind of keeps people engaged. So I guess that's why they kind of like all that. So I've been there, but I'm blessed to be there. And from there, actually, I got recognized from there. A family of Fiji in Focus show also reached out to me and asked me if I would love to kind of come to the show or talk about it or just be out here and try to host. So I got a big opportunity through that, and I feel like it's amazing. And it's just a TikTok family I have, and because of them, I'm here today. Well, I wish you all the best in your TikTok endeavors, and I'm glad that you're able to use TikTok as like a platform for positivity and education as well, because I know in the world that we live in today, a lot of the times we're faced with so many negative things that you're able to bring a little bit of positivity to the world. So thank you for that. Well, in this COVID situation, the best that we can do is make people smile. But thank you. I really appreciate that. No, absolutely. Thank you all for watching Fiji in Focus today. We'll be right back after this. Wonderful. Thank you. Now चलते हैं एंटरटेनमेंट की ओर. वो लाइफ ही क्या जिसमें एंटरटेनमेंट ना हो. कैसे कहें हम दिल की ये बातें, कैसे कहें हम दिल की ये बातें, कैसे गुजारी ये सारी रातें. आके दूं तुझे दिल ने जो है कहा, बता दूं तुझे दिल में जो है छुपा. आके दूं तुझे दिल ने जो है कहा, आ सुन ले मेरे दिल की तू ये सदा. कैसे कहें हम दिल की ये बातें.
ये तेरी जुल्फों की साए आके हमें छेड़ जाए, ये तेरी जुल्फों के साए आके हमें छेड़ जाए। शिकवा भी तू है शिकाया, चाहा तुझे तू है चाहा, कैसे कहे हम चाहत हमारी दिल में छुपा लो ख्वाहिश तुम्हारी। आके दूं तुझे दिल ने जो है कहा, बता दूं तुझे दिल में जो है छुपा। आके दूं तुझे दिल ने जो है कहा, आ सुन ले मेरे दिल की तू ये सदा। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। हमारी अगली मुलाकात एक बार फिर होगी नेक्स्ट वीक। Keep watching Fiji in Focus हर मंगलवार that is Tuesday at 10 p.m. और हर रविवार that is Sunday at 4 p.m. Alberta time 5 p.m. Sponsorship के लिए please call Kamilla at 604-537-5123. अपने और अपनी परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा चंद। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।